Students, let's talk about base. We have discussed in the previous lecture about the acids and their properties and different reactions. Now, first of all, we will discuss about the definition of base. Base are those chemical substance which releases OH negative ions in water. You have seen in the previous video that acid release H positive ions in water, but base release OH negative ion in water. For example, NaOH, it will release Na positive and OH negative. So OH negative release means it is a base. Now the properties of base: it is bitter in taste, it can neutralize acid because it is opposite to acid, it is soapy in touch means soap जैसा होता है, and slippery होता है, turns red litmus blue, red litmus को blue कर देगा, and corrosive in nature. We have already discussed about the corrosive nature. Conduct of electricity means it can conduct electricity in water. Now we will discuss about the strong base and weak base. Now strong base are those which can dissociate completely into OH negative ion in water. You have seen in the previous video about acid that acid can completely dissociate, so they are called strong acid. But in case of base, they dissociate completely into water in OH negative ions, so they are called strong base. For example, NaOH and KOH both are strong base because they completely dissociate into their ion Na positive and OH negative. Similarly, KOH also release K positive and OH negative ion, so it is also called strong base because it is also completely dissociate. Weak base are those which incomplete dissociate into ions. For example, NH4OH, NH4 plus OH negative. It is called ammonium hydroxide. This is potassium hydroxide. This is sodium hydroxide. Ammonium hydroxide dissociate into ammonium ions and OH negative ions, so they are base but weak base. Next is different chemical reactions of base. What are the different chemical reactions? There are three reactions which are in our syllabus. First reaction is NaOH बेस रिएक्शन विद मेटल. बेस की रिएक्शन अगर मेटल के साथ करवाएंगे, फॉर एग्जांपल जिंक मेटल, और इसको हीट करते हैं तो बनेगा Na2ZnO2. दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट. दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट. प्लस साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी. सो दिस सोडियम जिंकेट इज अ सोल्ट and hydrogen is a gas, so metal always give hydrogen gas with base as well as acid. You have seen in the last video that HCl will also give hydrogen gas, so it is the property of metal with reaction with base and acid, they always give hydrogen gas. Second reaction is with the reaction with acid. We can take NaOH as a base and acid as a H2SO4 sulfuric acid. This is sodium hydroxide and this is sulfuric acid. You know very well, it will form Na2SO4. कैसे? Double displacement. Na will displace the hydrogen and it will form the Na2SO4 plus water, salt plus water. This reaction is neutralization reaction. Acid plus base form salt plus water. This is sodium sulfate. Next reaction is the base react with a non-metal oxide. What are the reaction? CaOH का whole twice, calcium hydroxide. You have seen in the last video that calcium hydroxide formed when calcium oxide react with water, so it is called lime water. This is lime water or slaked lime. When it is reacted with non-metal oxide, carbon is a non-metal and you can see it is oxide. This is also having basic property, so calcium hydroxide plus carbon dioxide
will give calcium carbonate plus H2O. This reaction we have already learned in the previous videos. So these are the three reactions, different reactions of base, which we will have to study in this chapter. Now there are two different points which we will have to discuss about base. That mixing of base with water gives exothermic reaction, means it will exert heat when it react with water. Second is the effect of dilution. What is the effect of dilution? Means we have to water into the base. If we add water into base, then the OH ion concentration per unit volume decreases. As you know, if we increase the level of water, then the dilution will be more, because the number of OH negative ion will decreases as the number of water molecule increases. Means volume उसका जैसे जैसे पानी का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे concentration of OH negative ion डिक्रीज होती जाएगी. इसका एग्जाम्पल हम पिछली वीडियो में भी ले चुके हैं, शुगर वाला, कि 1 टीस्पून अगर आप शुगर ले लें और 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लें तो क्या होगा, उसको डिसॉल्व करने के बाद अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर उसी में फिर से ऐड कर देते हैं तो जो नंबर ऑफ शुगर आयंस हैं, यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे उसमें कम. जो जितने 1 ग्लास ऑफ वाटर में थे उतना 2 ग्लास ऑफ वाटर में नहीं रहेंगे, तो इसीलिए वो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी. दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ बेस. फर्स्ट इज द it is used in the manufacture of soap, paper, synthetic fiber. Synthetic fiber में fiber का नाम है rayon. It can be used in the manufacture of rayon. So this is the first use of base. Second use is the used to make the bleaching powder. Bleaching powder का हम use आगे पढ़ेंगे salt में, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है. This is formed with the help of calcium hydroxide and used for the formation of bleaching powder. Next one is the magnesium hydroxide, which is used as an antacid to neutralize the excess acid in the stomach, because it is a basic nature, and if we have acidity then it will neutralize the excess acid in our stomach and will act as a antacid. Next is the sodium carbonate, which is used in washing soda for softening of hard water. हार्ड वाटर कौन सा होता है, जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं, जो किसी भी सोप के साथ फ्रोथ फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब उसके साथ कोई लेदर या झाग नहीं बनते, उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर. तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट कर देता है. बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका. NaCO3, दिस इज द बेकिंग सोडा विच यूज्ड इन द कुकिंग फूड टू क्योर इंडाइजेशन एंड फायर एक्सटिंग्विशर. मीन्स ये फूड के कुकिंग में आपने देखा होगा बेकिंग सोडा का यूज करते हैं हम. एंड इंडाइजेशन मीन्स ये एंटी एसिड की तरह भी वर्क करता है. और फायर एक्सटिंग्विशर, जब हम फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं मीन्स आग को बुझाने वाला, तो इसके अंदर हम ये NaCO3 एज अ बेस यूज करते हैं और एसिड जो है वो H2SO4 यूज करते हैं. तो वो H2SO4 की हेल्प से और इसकी हेल्प से दोनों एक ये क्या करेंगे, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करेंगे, और उससे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसको फायर एक्सटिंग्विशर की तरह हेल्प करेगी. ये जो फायर एक्सटिंग्विशर वाला एक्सपेरिमेंट है वो हम सोल्ट में करेंगे. तो दैट्स ऑल अबाउट द बेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट. So what are salts? Salts are ionic compounds which mean that they are made up of ions having two parts. As you know, there are two kinds of ions, positive and negative. So they will form positive charge and negative charge, and the positive and negative charge are always equal. They are always equal, so they form the neutral salt. Means जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे. और हमारे पास इसकी बहुत सारी रिएक्शंस हैं. 3 रिएक्शंस हम इसकी स्टडी करेंगे जो आपने प्रीवियस वीडियो में कर ली है. वैसे तो जस्ट एक रिवीजन है उसकी. तो फर्स्ट वन इज द बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एज यू हैव डन प्रीवियस lecture. NaOH is the base, HCl is the acid. They will form salt, neutral salt, NaCl and water.
This is also NH4OH is a base, HCl is an acid, acid plus base will form the salt plus water. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग वीक की बात मैं बाद में करूंगा कि ये एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक सॉल्ट है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. जस्ट हमें ये देखना है कि ये सॉल्ट बना है बस. बाय द एक्शन ऑफ मेटल ऑन एसिड्स, मेटल दिस इज Zn, एसिड इज H2SO4, यू कैन सी ZnSO4 बना, और हाइड्रोजन गैस ये भी हम रिएक्शन कर चुके हैं. Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2. अब हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं, ओनली सॉल्ट्स पर. नेक्स्ट द बाय द एक्शन ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ एसिड्स, calcium carbonate when react with the HCl. This reaction you have done earlier in the acid, you can check. It will form the calcium chloride. This is also a salt plus water plus carbon dioxide. Or sodium hydrogen carbonate when react with the HCl means hydrochloric acid, then it will form the salt. Sodium chloride, water plus carbon dioxide. So this is all about the introduction of salt.